सर यहाँ पे सेंटर में भाई यहाँ पर भाई यहाँ पर भाई भाई यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे भाई टाइगर सर सेंटर सेंटर सर इसको देख लो, नहीं कर पाएगा। टाइगर सर यहाँ पे हाँ हाँ बबलू भैया बबलू भैया राइट मैम सेंटर सेंटर वर्धमान सेंटर सामने देखिए ना मैम ये सेंटर सेंटर तारा सेंटर, तारा इकडे इकडे सेंटर सेंटर तारा इथे तारा समोर समोर तारा सर सामने सेंटर बोलतो तू मैम सर या अहमद सर Tiger, Mehboob sir, Vada ma'am, please. Okay then. बस थैंक यू, प्लीज सिट डाउन, थोड़ी बातें कर ले, थोड़ा कैन वी हियर देम टॉक, बातें करते हैं, थोड़ा सुनते हैं. थैंक यू, सो स्वीट, प्लीज सिट डाउन. Good. Okay, so before we go to media Q&A, I also want to ask a few things. Varda ma'am. Yes. Okay, it's been 8 years, Heropanthi 1 to Heropanthi 2. Journey, your feelings, your emotions, your entire experience. Oh my God, it was like a very very beautiful feeling. तो जैसे मेरा first baby हुआ था, first time साजिद launch कर रहे थे टाइगर को, तो वैसी ही feeling आ रही थी. ऐसे लग रहा था जैसे कि वाकई we were having a baby. And बहुत अच्छा लगता है इन 8 सालों में टाइगर की जो सक्सेस रेट रही है, ये देख के तो और इतना अच्छा लग रहा है. आई एम रियली इट इज़ वेरी emotional moment for me because itna pyar, itni mohabbat Tixi ko. His journey has been beautiful and we've had beautiful 8 years and looking forward to 80 more years. And more power to you, Trix. We love you. थैंक यू वर्धा मैम. एक मोमेंट और है यहाँ पर, एक और चीज़ है. महबूब सर, रहमान सर, अहमद सर, द ट्रायो, द रंगीला टीम, द मैडनेस, द मैजिक. So I want to know from each one of you, how's the emotions, how's the feeling right now? How does it feel, 3 of you together? Actually, when we collaborated again, so it was like coming back to home and family, and we reminisced रंगीला days. और फिर वही फायर आया जो रंगीला में था और आपको और दिखेगा गानों में इंशाल्लाह. सो या एंड जैसा रहमान ने कहा कि हम यंग हो जाते हैं अहमद के साथ काम करते तो, बिकॉज दिस गाय हैज सो मैनी आइडियाज इन हिज हेड, लिरिकली बोलो या म्यूजिकली बोलो, एंड एवरी सॉन्ग यू बिलीव अस. हमने हंसते खेलते भी किया, मज़े भी लिए खूब, और द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. एंड आई वुड लाइक टू थैंक टाइगर एंड तारा एंड ऑल. वर्दा जी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमारे गानों में बड़ा रंग भर दिया इन्होंने. थैंक यू. Thank you, sir. Rahman sir. He said everything. When I make music, actually, the things I do is like from classical music to folk to Tamil to Telugu to English. So I need an anchor to look. When I look at the face, I reflect that. So this is the face it's looking. And he said, let's do this. And whenever I play something and I send it to him, I love this. So that made us actually make the tone of this whole music came from his vision. And baby face. Ahmed sir, do you want to add to something? I won the Oscar after what he said. Yeah. So, I've got 2 Grammys What now. a compliment. So, Totally. you know, it's a pleasure always to work with AR and the team, Mehboob bhai, all of us. And I began my career as a choreographer in 1995 in Rangila. And we got the love. तो इसमें भी हम वही चाह रहे थे कि वही मैजिक क्रिएट करें. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड
genuinely it feels कि रंगीला को जो 26 साल हुए वो बस यूं ही गुजर गए. Because when we speak together, we work together, the energy is same. And of course we are young, and y'all could see it. And the music is really, I can say दिल से किया है, सब बोलते हैं, but ये हमने दिमाग से भी किया है, because youngsters को भी पसंद आना चाहिए. And I think so, the alfaz, the words what he has used, the kind of music AR has given is very, very, very today, keeping in mind the beautiful melody also. So I'm grateful. Also, I think people ask me, do you keep the hero in mind, the heroine in mind, while doing music? The way he dances, I think, pushes us to even challenge him more. So, That's true. I'm That's dead true. sure this is one of those track जब भी रेडियो पे whenever I'm playing or something, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जैसे प्ले होना शुरू होता है हमें बहुत बार बोला हो जाता है गाने मत बीच में मत गाना. एज एन आरजे तुम्हें बहुत तुम्हें एक्साइटमेंट हो जाती है, तुम लोग गाना गाने लग जाते हो. सो देयर सर्टेन ट्रैक्स जिस पे बिल्कुल नो होता है, प्ले एंड जस्ट गेट आउट ऑफ द स्टूडियो, चुप करके हट जाओ. सो आई एम श्योर ये वो गाना होगा जिस पे मुझ पे तो डेफिनेटली बैंड लगेगा. गाने की कोशिश मत करना, नाच लेना पीछे से. थैंक यू सो मच. बिफोर नाउ आई ओपन द हाउस फॉर मीडिया Q&A. Please go ahead and ask your questions. The entire team is here. जब भी आप और साजिद साथ में आते हैं तो आपकी जो फिल्म है कमर्शियली हिट होती है, क्या वो एक सक्सेस मंत्र है जो आप शेयर करना चाहेंगे विद द ऑडियंस? मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हम. एंड यू नो आई वर्क वेरी हार्ड फॉर हिम, ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर मी, एंड इट्स लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप. मैं तो खासकर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आई हैव सच अ यू नो if not the best producer, I have one of the best producers in my corner who's also like a father figure. So I mean the least I can do is work my hardest for my family, and yeah, I think that's all. कोई secret weapon नहीं है, कोई secret mantra नहीं है. टाइगर एंड पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस फॉर द फैब ट्रेलर, और गाना भी बहुत अच्छा लुक निकल के आया. टाइगर इधर आपके सामने. एक्शन जो है बड़ा ही स्टाइलाइज्ड है और हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन दिखता है. वैसे तो आप जब भी फिल्म में आते हैं एक्शन जो होता है वो पिछली फिल्म से ज़्यादा बेटर करने की आप कोशिश करते हैं. Thank you. एक तो कितना प्रेशर होता है, और दूसरा जब इतनी खूबसूरत हीरोइन हों, ऐसे प्रोड्यूसर्स हों, ऐसे डायरेक्टर हों, कमाल के लोग हों, और ख़तरनाक विलन हो नवाज टाइप का, तो कितना आपके अंदर प्रेशर होता है कि पिछली फिल्मों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना है? प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होता है, खासकर क्योंकि जैसे आपने कहा, यू नो आई हैव गॉट सच अमेजिंग पीपल अराउंड मी, सच एन अमेजिंग टीम इन तारा, वादा मैम, साजिद सर, महबूब भाई. It's my pleasure and honor to be working and sitting right next to Mr. A.R. Rahman sir also. So thank you very much for the honor, sir. Of course, my favorite director, Ahmed sir, who's also my family. So when I have a team like this, you know, I don't take any of the pressure. He actually takes all the pressure on himself. तो वो खुद सब प्रेशर स्ट्रेस लेते हैं और मेरे को खाली बोलते टाइगर तू ये करके दिखाना. सर कोशिश करता हूँ, चलो ठीक है. कई बार ऐसा हो ही जाता है एक ही टेक में, दो ही टेक में, एंड आई डोंट क्रेडिट फॉर माई सेल्फ. यू नो आई गिव हिम द क्रेडिट, आई गिव द एक्शन टीम द क्रेडिट, आई गिव माई बॉयज़ द क्रेडिट, यू नो हु आर माई टीम, कुलदीप, नदीम, विक्रम. दैट्स प्रीटी मच इट. एंड एज फॉर आपका दूसरा सवाल क्या था, सॉरी? विलन, आई मीन एग्जैक्टली नवाज सर. अभी नवाज सर के सामने तो मैं तो एक बोल नहीं पाऊँगा अभी, पर I'm basically, you know, a big fan of Nawaz sir. He's such a senior actor and so much to learn from him while just watching him perform on set. So, like I said, kismat meri achhi hai kyunki I have such an amazing team around me, so I take no pressure. Thank you. Congratulations to the entire team. The song and the trailer is fab. हीरोपंती से आपने शुरू किया था, और अगर मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि लोगों ने पहले हीरोपंती को कहा था कि टाइगर लुक्स लाइक हीरोइन बनती है एक्चुअली, यू नो, मतलब. पर मैं आई बिलीव मी लाइक आई हैड रिव्यूड इट कि टाइगर इज़ फैब, और आगे जाके ही विल डू, बहुत ही अच्छा करेंगे. वो एक फेज़, और आज के फेज़ में यू हैव सच अ यू नो बिग फैन फॉलोइंग. मतलब यू आर द बेस्ट, यू कैन से इन डांसिंग, यू कैन से बेस्ट बॉडी, best fight. I'm not the best in anything, I feel honestly. it like that in I'm not today's the best time, in in fact. anything. I You just know, work very hard. How do you see that particular thing? जो पहली हीरोपंती थी और आज जो हीरोपंती में, उस टाइगर श्रॉफ में और आज के टाइगर श्रॉफ में क्या फ़र्क देखते हो? उस टाइम पे दाढ़ी नहीं आती थी, अभी दाढ़ी आने लगी, तो उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है. यू नो आप सबका प्यार है,
उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. You know, my Tigerians are at the back right now, so I love you guys. So whatever little I am, it's all thanks to my supporters and my well-wishers, and it's because of them I'm here. Love you more. I love you more. You know I love you more. Come on. Yeah. A.R. रहमान साहब से मेरा and महबूब साहब आपसे actually आप you said like young team रहती तो you know हम भी young definitely you all are young because हमें दिल से और दिमाग से भी सोचना पड़ता है as Ahmed said it like you know जब ये particular गाने की बात करते हैं हम महबूब साहब के लिए खास अगर आपने कहा था यार ऐसे कुछ young वाला गाना बनाना है जिसमें फक्कर आई डोंट नो मतलब फक्कर ये साउंडिंग है तो उनका रिएक्शन क्या था एक्चुअली व्हेन ए.आर. रहमान आपका रिएक्शन तो जैसे जिसकी सोच नो एक्चुअली कल से कमेंट्स भी बहुत पढ़ रहा हूँ No, he is slightly twisted man. So from 24 years he will give the F words like whatever is in Urdu with F. He'll always give it to me. I reject it. This man okayed it. पर जोएल आपको क्या लगा? आपने क्या सुने? हाँ जैसे जिसकी क्या सोच सुने आपने? हम तो अपना लिखे थे अच्छे से. दफा कर. नहीं क्या चलता है? ये क्या सोलमिया? इस बात का डाउट था पहले हमको पर हमने सोचा चलो यंगस्टर्स तो एंजॉय. Remember, I do 3 languages: Tamil, Telugu, and Hindi. So one word in Telugu which is with respect is a bad word in Hindi. So I have to deal with all this stuff. So. हाँ जी जी पाजी सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम. बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो आफ्टर पैंडेमिक वी आर वाचिंग यू अगेन और बड़े पर्दे पे पिक्चर भी हमें देखने मिल रही है. सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. टाइगर मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू नो A.R. रहमान सर द ग्रेट A.R. रहमान सर इज एक्चुअली यू नो द वॉइस बिहाइंड योर सॉन्ग एंड यू आर डांसिंग ऑन हिज ट्यून. व्हाट वाज योर रिएक्शन? I mean, I was, you know, privileged and I was in awe, and my family, myself, you know, we're huge fans like every one of you in the theatre right now. My mother had the privilege and honor to work with Mr. A.R. Rahman as well. So she just told me how amazing of a person he is, other than the musical genius and talent. So I've been waiting for this day to meet him personally, and him being the vocals to my face, you know, for the first time as a hero, it's a big thing. I feel it's another milestone in my career because I have his voice. You know, backing me. So yeah. So टाइगर मेरा आपसे सवाल एक और है कि जैसे फिर से नो पैंडेमिक के बाद फिर से फिल्में शुरू हो चुकी हैं एंड बिग स्क्रीन का मजा बिग स्क्रीन पे ही होता है. सो जिस तरीके से अब ये जो दौर रहा है हाल ही में जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स जिन्होंने 200 करोड़ की कमाई की है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? अ फिल्म दैट हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I mean, it's fantastic. It just goes to show that people are going to the theatres, and khaskar, you know, if I want to be greedy, you know, Heropanthi is a theatre film. So I'm very, very happy that people are coming to watch films in theatres again, and it's a great, great feeling and a great time for our industry. I think it's sort of a rebirth. Yeah. 8 सालों में काफ़ी कुछ बदला है. लुक्स बदले हैं, काफ़ी कुछ बदला हुआ है. एक चीज़ और बदला है इस बार की, इस बार फिल्म ईद पे आ रही है और ईद के लिए सलमान खान जाने जाते हैं, सब लोगों को पता है. तो एक्साइटमेंट हर बार की तरह सेम है, इस बार कुछ अलग है कि सलमान खान का जो फिल्म आता है ईद पे उस बार आपकी आ रही है, पहली बार आ रही है. देखो एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान. हम तो बिल्ली है उनके सामने, हम तो टाइगर कब है उनके सामने. पर किस्मत अच्छी है मेरी, लाइक आई सेड, यू नो दैट वी गॉट व्हाट डिड ही से? Simba. Yeah, you can say I'm Simba in front of him. But very, very happy for me. It's a big deal to come on Eid, you know. और हालांकि I can't take the credit. The credit goes to Sajid sir, and it was his decision to, you know, give us that release pad, that launch pad. Yeah. तारा, इससे पहले आपने टाइगर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी काम किया था, तो क्या कुछ अभी तक आपको लगता है टाइगर में कुछ बदलाव आया है कि सेम फीलिंग काम करके आपको लगा कुछ अलग? नहीं, बिल्कुल नहीं. एंड थैंक गॉड फॉर दैट. ही इज स्टिल हम्बल, काइंड, जनरस एंड गिविंग एज अ को एक्टर. एंड वी हैड more fun on this film or more fun on Student, I can't decide, but बहुत ही मजे on this film. Decide. You have decided. Chalo, on this film for sure. And of course working with Ahmed sir has been such a riot and a ball, and it's been so much fun. So I think the whole experience of working with Sajid sir, Varda ma'am again after Tadap, doing Heropanthi 2, and of course working with Rahman sir has been so fantastic for all of us, and of course Mehboob sir as well. So it's just been a wonderful experience. जी, मेरा ये सवाल है कि अगर A.R. रहमान सर की टीम हो और साथ में टी सीरीज़ का साथ, तो एज अ प्रोड्यूसर
आप कितनी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं? जैसे आपने कहा AR रहमान सर एंड माय ब्रो एमएल वाज सेइंग कि ऑस्कर्स और ग्रैमी के नीचे तो हम कुछ सोचते ही नहीं है. सो या इट फील्स वेरी नाइस. हमारी पिछली हाईवे ऑल्सो वाज ह्यूज हिट एंड तमाशा भी लोगों को इतनी पसंद आई थी. तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि AR रहमान सर की इतने प्यारे गाने हैं. अभी तो आपने सुना ही नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा एल्बम बना है. एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज भूषण की मार्केटिंग इज़ फैंटास्टिक. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, looking forward to a great success again. Third time, even Malak here. Tara, my question is because Heropanthi launched obviously Kriti, and now you are taking the franchise ahead. Any sense of responsibility or any kind of added baggage or something like that? No, I don't think there is baggage. My first film was also exactly like, I think, Heropanthi, in the sense that people obviously think that there is a sense of responsibility, and there is. But I feel like when you work with such a supportive and fantastic team, you don't feel that pressure. And I genuinely mean that. I know everybody says that. But when you have the team that I'm sitting with right now, I think it's been the most fantastic journey, because not even one day did anybody make any of us feel like there was stress or pressure to carry on the franchise. And I think that's the joy of working with Sajid sir and the joy of working with Ahmed sir as well. सो मेरा सवाल अहमद सर से है और टाइगर से है. सो अहमद सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि रील्स का ज़माना है, एंड रील्स को ध्यान में रखते हुए गाने पर कितना ज़्यादा काम किया है आप लोगों ने इस फिल्म में. एंड टाइगर, आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी तक ज़्यादातर आपने जो भी फिल्में की है, हर फिल्म का सीक्वल रहा है. ये आप सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर कोई स्ट्रेटजी है आपके काम करने की? इसके बारे में बताइए. You wanna answer first your question? You sir. मैं सोच रहा तब तक. हमने तो बनाई है रील के लिए, थिएटर के लिए. और रील्स पे चल जाए तो इट्स ग्रेट, बिकॉज जो वर्ड्स हैं इस गाने के इज़ एब्सोल्युटली, आप देखो दफाकर इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड, बट उसके दो मीनिंग होते हैं. I'll explain you. एक होता है कि अच्छा लगा हर दफा कर, नहीं अच्छा लगा दफा कर. सो दिल जो बोले 100 दफा कर, कोई ना माने आउट. तो दफा करके दो मतलब है, आज आप समझ जाएंगे. सो फॉर रील्स डेफिनेटली बी ग्रेट फन एंड द एक्सप्रेशन इज सो करेक्ट. बट तीसरा मीनिंग किसी और को निकालना हो तो निकाल लें. एंड मोस्ट वेलकम. द मोर द मीनिंग्स द मेरियर. एंड ऑफ कोर्स रील्स में चलेगा ये, दैट्स व्हाट वी फील. नहीं चला तो दफा कर. मैम, हीरोपंथी और बागे के अलावा फिलहाल तो आई हैव नॉट बिन अ पार्ट ऑफ एनी फ्रेंचाइज राइट नाउ. बड़े में या छोटे में, आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड. दैट वे आई एम जस्ट लकी, आई गेस. इट्स देयर इज नो planning behind it. I'm just lucky that all of you have accepted both Bagi and Heropanthi for it to have another chapter. So yeah, thank you so much. Thank you to all my fans and well-wishers and my extended family again. Yeah. Nawazuddin Siddiqui is playing a negative lead in the film. He has played a negative role in another Sajid Nadirwala production, that is Kick. So when you were conceptualizing the character and when you approached him, what was the idea to keep it different from Kick? See, that's a good question because क्या है कि टाइगर ने सीरिया ख़त्म कर दिया बागी 3 में, एंड 2 में ही फिनिश्ड पूरा गोवा हुआ सब. तो अभी हम ढूंढ रहे थे तो क्या बोले, नाउ वर्ल्ड वांट्स टू किल हिम. सो नाउ वर्ल्ड इज बिहाइंड टाइगर, नहीं तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी. सो एक कोई विलन मिल नहीं रहा था थैनोस जैसा. सो व्हाट वी हैड टू थिंक इज गेट अ विलन विथ माइंड एंड अ मैन हु कैन एक्सप्रेस विद हिज आइज. तो वी रोट अ कैरेक्टर एंड उस कैरेक्टर का नाम निकला लैला. एक आदमी जिसका नाम लैला है एंड ही इज़ अ कन्फ्यूज सोल. अब इसको कौन पोर्ट्रे करेगा? सो द होल फिल्म देर इज़ नो एक्शन, बट देर इज सो मच एक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो ही प्लेज अ मैजिशियन. तो एक ही नाम जहन में आया था और वही नाम था, और वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी. सो व्हेन आई ऑफर्ड हिम द फिल्म, आई सेड, नवाज भाई फिल्म आपको नरेट कर रहा हूँ, आपका कैरेक्टर नरेट कर रहा हूँ, और तीसरी बात बोल रहा हूँ ये आपको करनी है, ऑप्शन ही नहीं है. बट व्हेन ही हर्ड द कैरेक्टर ही लव्ड इट. बट डेफिनेटली जब सलमान खान साहब के सामने कोई एक विलन खड़ा रह सका है ऑफ लेटली, वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी विद द डील डॉल एंड द फिजिकलिटी विच इट डजंट हैव. उसके बाद आई थिंक टाइगर के सामने वी वांटेड दैट सेम वाइब, एंड ऑफ कोर्स इट वाज डन बाय माय एल्डर ब्रदर साजिद नडियाडवाला. तो आई सेड व्हाई नॉट प्रोसीड इट फर्दर अहेड. सो दैट्स व्हाई लैला केम, एंड
Nawaz Bhai came on board. The song and the trailer both are looking fantastic. My question to you is that your movie is coming on Eid, and there is another film that is also coming, Runway 34. It's a clash. So is this a measure of how quickly your stardom has grown and how massively your fan base has increased in these few years, that you can clash with a film that has two seniors like Ajay Devgan and Amitabh Bachchan? Honestly, I can't compare to such major superstars like Ajay sir and Amitabh Bachchan sir. You know, मैं तो ये फिर नहीं बोल पाऊँगा, वो शब्द नहीं बोल पाऊँगा, पर मैं वो बराबर हूँ मैं उनके सामने. तो आप समझ लो. You know, I have way too much respect and I'm way too much of a fan of both of them to even be spoken about in the same breath as them. But thank you so much for your generous words. Halanki, I know Runway 34 is looking fantastic. I myself am looking forward to watching that film. I'm looking forward to watching this film also. And I hope you guys all are as well. But I think, you know, I think all films can flourish together, honestly. And with a date like Eid, I think, you know, there's space and time for everyone. Eid pe ye dekhna, baasi Eid pe wo dekhna, ya Runway 34 dekhna Eid pe aur isko baasi Eid pe dekhna. It's as simple as that. Yeah, you don't have to clash or anything. We can all flourish together. So, yeah. Also, Tiger, is this when it comes to action? Do you think so? The Bollywood action hero has too much of pressure compared to any action hero around the world, like say even Hollywood action heroes? Because when people go to see Vin Diesel, Rock, or even Arnold Schwarzenegger, Sylvester, they just used to go to see action. When it comes to Bollywood action heroes, whenever it's an action film is looking completely action oriented, still people say to dance bhi hai, drama bhi hona chahiye, ye bhi hona chahiye, wo bhi hona chahiye. So you think so Bollywood action heroes have got too much to face? I think there are two different audiences, there are two different sets of expectations. You know, we have music is such an integral part of Bollywood, and not just Bollywood, I just say Indian cinema. So that being said, I think it's just in our DNA, and I don't take it as a pressure. I love to dance, I love to fight. Action में छोटे मोटे चोट लगते रहती है, तो you know. So dancing is more fun, but yeah, I would say it's a very holistic approach for an action hero in Indian cinema, because we have to do a little bit of everything, and it's hard work, but I'm blessed and I'm very thankful. We'll take the last question. छोटी मोटी चोट ऐसी है, मतलब जो एक हफ्ता हम एक महीना बिस्तर से ना निकले वैसी चोटें होती है जो इनके लिए छोटी मोटी चोट है. Tiger, hi Tiger and Mr. Rahman, hi. टाइगर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से यूक्रेन एंड रसिया में वॉर चल रहा है, आप मानते हैं कि एक ऐसे हीरो की ज़रूरत है इन दोनों कंट्रीज में जो इस वॉर को शांत करा सके? एंड मिस्टर रहमान, व्हाट अबाउट यू? मिस्टर रहमान, आप क्या मानते हैं, कि आप भी मानते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में एक ऐसे हीरो की ज़रूरत है जो इस तू चाहता है कि मैं फंसूं भाई? नहीं. Guys, we are taking questions only related to the film, please. तो बाद में मिल Last question. Last questions related to the film only. Last question. My question to Rahman साहब is congratulations after अतरंगी रे. क्या अभी आप अच्छे दिन आ गए हैं म्यूजिक के कि लोग और भी म्यूजिक सुनना चाहेंगे? एंड सेकंड क्वेश्चन फॉर टाइगर इज, आज मैंने प्रोफाइल में इनके देखा कि ये अच्छा गाते भी हैं, क्या आप उनसे एक लाइन गवाएंगे आज? There's a lot of surprises in the movie. We'll reveal it later. Thank you for the compliment. And music has always been there. I think the way we promote it, and there's a responsibility of our society to bring back the beauty of music, whether it's classical music or folk music, and some of the stuff happens in movies, but I take it as a personal thing when wherever I can insert the classics of the past, bringing back the beauty, because people take what we give, and we have a responsibility as media leaders. Thank you. I'm missing somebody, and that's the most important person is film ke. हमारे बड़े भाई साजिद नडियाडवाला, he couldn't attend because he is not well. So I can't say it's a vacuum because my sister Varda Nadiadwala is here. So, but missing him, and I wish that he was here holding our hand and standing with us. But nevertheless, so just wanted to say that we really miss you, Sajid bhai, and the whole team is here and missing you. के लिए, एंड गाना बहुत ही अच्छा था. मेरा सवाल आपसे है कि बॉलीवुड में एक्शन
एक्टर्स की बात करें, एक्शन स्टार की बात करें, आपको एज अ एक्शन एक्टर, एक्शन स्टार पैन एशिया में काउंट किया जाता है, तो हाउ डज इट फील? बिकॉज इसमें बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिसमें आपका भी नाम मेंशन है, बिकॉज आपकी मूवी इस बात को बयां करती है. हाउ डज इट फील इफ यू वांट टू से अबाउट इट? Well, it's a great honor, sir. Or, just to be given an identity amongst so many, esteemed people, so many high esteemed people. It means a lot to me. मैं बहुत ही grateful हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. और इस बात को लेकर काफ़ी डरता हूँ भी, क्योंकि there's a lot of expectation. To be an action hero, it's very tough to keep reinventing ourselves and to give you guys a good show again and again. And staying healthy is just something that I've just been trying to do, especially now that I'm a little older than what I used to be. Thank you. Sorry, older than, yeah. Did I say that right? Sahi bola na? Perfect. Thank you. Thank you everyone. Wish you all the best for the film. Thank you so much for being an amazing audience, and we'll go for a group picture. Media photo time.